धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत। Special mentions, Honorable Dr. Lakshmikant Ji Vajpayee. उत्तर प्रदेश खेलों का केंद्र है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देश में सर्वाधिक प्रतिभागी उत्तर प्रदेश से होते हैं। प्राप्त पुरस्कारों में भी उत्तर प्रदेश की सहभागिता सर्वाधिक है। उत्तर प्रदेश को प्राप्त पुरस्कारों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश तथा उसमें भी मेरठ जिले की सहभागिता सर्वाधिक है। आभार व्यक्त करता हूं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का कि उन्होंने मेरठ खिला रखी। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भी मंत्रिपरिषद में स्वीकृति प्रदान करके 300 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान इस वर्ष किया गया है। तदहेतु भी आभार व्यक्त करता हूं, लेकिन इससे तत्काल आवश्यकता की पूर्ति नहीं होगी। मेरी मांग है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में ब्लॉकों में निःशुल्क भूमि उपलब्ध होने पर खेलो इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत खेल मैदान, रेसिंग ट्रैक आदि बनाकर विकसित करने का निर्णय कर क्रियान्वित करना चाहिए, ऐसी मेरी मांग है। Honorable Shri K.R.N. Rajesh Kumar Ji. Not present. Honorable Dr. Bhim Singh Ji. महोदया, भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना चलाई जा रही है, जिसके तहत प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो राशन दिया जाता है। यह एक महत्वपूर्ण योजना है जिसके माध्यम से गरीब असहाय आमजन को भूखा नहीं सोना पड़ रहा है। ऐसे मानवीय योजना के लिए मैं सरकार का साधुवाद करता हूं। परंतु समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्तियों के लिए लागू इस योजना में भी कुछ आदमी अपना हित साधना शुरू कर चुके हैं। समाचार पत्र एवं क्षेत्र भ्रमण के दौरान जनता से पता चला है कि डीलर तय मापदंड से कम राशन लाभुकों को दे रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में आवश्यक हो गया है कि केंद्र सरकार कोई ऐसी व्यवस्था बनाए कि लाभुकों को उनको निर्धारित राशन मिल सके। अतएव अनुरोध है कि इस अनियमितता पर रोकथाम के लिए समुचित कदम उठाए जाएं। Honorable Shri Sant Balbir Singh Ji. Not present. Honorable Shri Neeraj Dangi Ji. Not present. Honorable Shri Samik Bhattacharya Ji. Not present. Present? Yes. Okay. Demand for a probe into post-poll violence against SC and ST people in West Bengal in the recently held general election. Madam, unspeakable atrocities on the people belonging to the scheduled caste and scheduled tribe categories and minority, community post-declaration of results of the government of the general election to the House of the People are taking place in the West Bengal. Right from the beginning of campaigning for the 18th Lok Sabha elections in West Bengal and from the declaration of the result of the general election to the House of the People 2024, unspeakable atrocities have been unleashed on the poor people, including women and children belonging to the scheduled caste and scheduled tribe categories, rendering many of them dead men and homeless. A total of 8 innocent people have been lost their lives because of this mindless attack. I would therefore like to request the government to undertake concrete action to protect the life and properties of persons belonging to the scheduled caste and scheduled tribe categories affected by the post-poll violence in West Bengal. Honorable Dr. Fauzia Khan Ji. Not present. Dr. John Bidras Ji. Not present. Dr. Sasmit Patra Ji. Not present. Honorable Shri Ayodhya Rami Reddy Ala Ji. Not present. Honorable Dr. Ashok Kumar Mittal Ji. Not present. Honorable Shri Sanjeev Arora Ji.
not present. Honorable Shri A.D. Sinha ji, not present. Honorable Shri Kartikeya Sharma ji, Thank you for allowing me to address this critical issue affecting print and digital media. The recent directive requiring self-declaration certificates for all advertisements, print, digital and electronic, aim to safeguard consumer interests and uphold advertisement integrity. However, this directive has introduced several operational challenges. There remains significant ambiguity, especially regarding non-claim advertisements published by small media houses for SMEs. These advertisers may struggle to comply due to the technical nature of the process and the limited resources. Additionally, the handling of the government and the public sector advertisements under this directive is unclear. Media houses face difficulties in preparing self-declaration certificates, registering on the portal, and troubleshooting issues which could deter advertisers from using print media and affect revenues and livelihoods of millions of people. Storage of self-declarations, weeding out and handling emergency advertisements pose further challenges, particularly within the digital media ecosystem. Given the potential for legal challenges and the technical issues with the portal, it is requested that the Ministry delay the implementation of these guidelines until clear and objective procedures are established. It is also suggested that the implementation be initially limited to medical ads and that a wider consultation with the stakeholders be conducted. Thank you. with this, the House stands adjourned to meet at 11 a.m. on Monday, the 1st July 2024.